Well, let's get you the update because it seems that the same template seems to be playing this year again. And this is the Ram Navami celebrations that have been marred by violence. A day after arson and vandalism that was reported in Maharashtra's Sambhaji, Nagar, eyewitnesses' accounts have also been emerging on the details that talk about the horror that transpired on the night before Ram Navami celebrations, as far as the clashes that were reported between the communities there and why in particular police vehicles were targeted. ने क्या कुछ सुना, क्या कुछ देखा? वो फतरे आ रहे थे। फतरे आ रहे थे? हाँ, फतरे आने के बाद 1 बजे से आना चालू हुआ। उसके बाद में 2:30-3 बजे इंतजार जलील साहब आए, उन्होंने ये करे। अच्छा, कितने लोग होंगे अंदाजे से? कोई मंदिर में आया? नहीं, मंदिर में नहीं आया, गेट लॉक था ना। गेट लॉक था। हाँ। तो कौन कौन मौजूद था मंदिर के अंदर? पुलिस वाले और मैं था। आप थे? फिलहाल यहाँ पर एक गेट है जो जिसका पूरा वो भगवा जो वहाँ पे कपड़ा लटकाया गया था, जो तैयारी की गई, जला दिया। हाँ, वो सब ये हो गया। क्या हो गया? जल गया, पुलिस के गाड़ियाँ और वो कपड़ा जल गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या नुकसान पहुँचाया गया? बस इतना किया गया। ऐसा पहले कभी हुआ है यहाँ पे? नहीं, पहली बार हुआ। 20 लोग मेरे को यहाँ पे। 20 हाँ। कितनी गाड़ियाँ आपने जली हुई देखी अंदाजे से? 5-6 गाड़ी होंगी। सारी पुलिस की थी? पुलिस की। जब बाहर आप लोग सुबह निकले यहाँ से तो क्या देखा आपने अपनी आंखों से? यहाँ पे पूरा पत्थर फैले वाले थे, गाड़े जलने वाले थे। अच्छा, नहीं देखा? हाँ, और वो अग्निशामक वाले सब गाड़ियाँ वो रोड वगैरह साफ कर रहे थे। और सामने एक गेट था, वो गाड़ी के साथ में जल गया। गाड़ी के साथ जला दिया? हाँ। अगर देर शाम की बात करें तो बताया जा रहा है कि कितनी सारी अब सीसीटीवी फुटेजेस है वो भी सामने आते हुए नजर आ रही है, जहां पे जो वहां के एमपी है इम्तियाज जलील और उनकी तस्वीरें सामने आते हुए नजर आ रही है, जहां पर वो लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि वहां पे शांति बनाए रखे। अब इस तरह से अगर ब्लेम गेम भी अभी हम देखें कि पॉलिटिक्स जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर हो रही है वो भी फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। समाज कंटक ज्यांना आपण म्हणू ते काही वातावरण बिघडण्याचा प्रयत्न करत होते आणि त्याच्यामुळे काही नुकसानही झालेलं आहे। पण चांगली गोष्ट हे आहे की राम मंदिर जे आहे, राम मंदिरमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कसलाही नुकसान झालेला नाही आहे। त्याच्यामध्ये जास्तीत जे युवा होते ते बटन प्लेयर, ते ज्यांना नशा करणारे नशेखोर जो होते, हे जे घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने आता पोलीस डिपार्टमेंटनी एक कोम्बिंग ऑपरेशन करून जे हे ड्रग्सच्या कारोबारमध्ये आहे, जे ड्रग्सचा उपयोग करत आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करा। महीने 1.5 महीने से शहर में हिंदू और मुसलमान में जहर घोलने का काम 2 गुट कर रहे हैं। और मैं सीधे साधे कहता हूँ कि इसमें इमाम है और भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले हमारे में क्या कुछ गद्दार लोग भी हैं। ये सब बातें कमिश्नर साहब को पूरी मालूम है पिछले महीने भर से क्या घट रहा है। इनलीगल मोर्चे निकाले जा रहे हैं, इनलीगल आंदोलन किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, किस पे कोई एखादा गुन्हा तो दाखल होना चाहिए। मी इम्तियाज जलीलला यांनी हे सुरुवात केलेलं आहे राजकारण या संभाजीनगरमध्ये महापालिका किंवा पुढचे खासदार की आमदार की जिंकण्यासाठी सगळं नाटक केलं। त्या इम्तियाज जलीलला त्या ठिकाणी त्याच्या पाठीमागे कोण आहे हे सुद्धा पाहून त्या ठिकाणी माहिती घेतली पाहिजे की काय चाललंय यांचं। इम्तियाज जलीलला आत टाकून द्या ना त्याला, हे सगळं तोच प्रकार करतो ना। फडणवीस हे फेल झालेले आहेत, काही करत नाही। चंद्रकांत खैरे ने राजनीति की, ऐसे स्थितियों में राजनीति नहीं की जाती है। और वो कहते हैं फडणवीस जी के दृष्ट रूप से इसमें हैं। उनको कुछ फडणवीस जी का मालूम है क्या उनका जीवन है? वो कभी ऐसी बातों को कभी तूल देते हैं क्या? कभी उनके जीवन में ऐसा रहा क्या? Well, this seems to be similar pictures that have played out before as well, and this time around we are looking at violence and clashes that have been reported on the occasion of Ram Navami. There you can see multiple cities there where violence that have been reported. It is a very sensitive situation as we talk about, whether be it in Sambhaji, Nagar, in Jalgaon, in Mumbai, in Vadodara and Howrah, and also in Lucknow as well. Several incidents that have been now also reported exactly what transpired on the occasion of Ram Navami, but also the politics that also is taking place there. We'll also point out the reactions that are coming in from both sides in a bid to flare up tensions between the communities in several of those areas. As far as the AIMIM leader is concerned, we just heard him speaking there, but also giving a twist to the entire scenario that played out during Ram Navami procession. A line
night before the Ram Navami procession was to say that possibly the name change of the city had led to anger amongst the youth, and they may have been angry over the name change and would have led to such violent clashes. तो अगर हम संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर के बारे में बात करें तो जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, बताया जा रहा है कि जो AIMIM के लीडर है उनको दूसरे मोटिव्स नजर आ रहे हैं। जहां तक बता रहे कि जो यूथ है उनका गुस्सा बाहर निकलते हुए नजर आया, जहां तक इन पर्टिकुलर अगर देखा जाए जितनी भी पुलिस के व्हीकल्स थे उन्हें टारगेट बनाया गया था। Now, those are the Ram Navami clashes that have been reported so far. As we are breaking down the details, let's get you exactly what happened in Mumbai as well. This is in Malwani in Malad. We are told, as we broke the story first here on Times Now, we are told that the situation is under control, but the police has now swung into action, and we are told that more than 300 people have now been booked for violence. The police will also be going through several CCTV footages as well to identify the people who were behind the stone pelting and throwing of chappals as well at the devotees who were carrying out a peaceful procession on the occasion of Ram Navami. So right now we are told, as the police deployment that has also been beefed up in that sensitive area, this is in a bid when it comes to not letting peace prevail in several of those areas. Actually, in two cities there in Maharashtra, it is being reported in Sambhaji Nagar, and this is Malad in Mumbai, where we are told that this procession that was being taken out on the occasion of Ram Navami was attacked and the devotees were pelted with stones. Let me go across to Arunil now. Arunil, as we are breaking the story, we are told by the police that they will be going through several CCTV footages as well, and around 300 people have been booked. Well, that is right. More than 300 people have been booked by the local Malwani police. As well as we want to understand, they will be going through the several CCTV visuals as well as the other visuals that are available, and accordingly, people whose faces are visible in this, the action will be taken against them. Till now, 20 people have been detained by the Malwani police. They have been thoroughly interrogated to find out what was the motive behind creating such kind of a ruckus, who attacked first, who are the people involved, are there any mastermind, are there any political leaders behind this. Everything has been asked to these 20 people who have been detained by the Malwani police, as well as the cops are on the hunt of the other people who were allegedly involved in this violence or clash that took place in the communally sensitive Malwani area of Malad. Give more details about the incident. Ram Navami procession was being held. That is when the procession reached a certain area. Between two communities, there was stone pelting that was being noticed. Stone pelting being done from both sides of the road wherein the two communities had gathered, and chappals were also thrown from both the sides. लेकिन अगर हम संभाजी नगर के बारे में भी बात करें तो अरुणिल, उसके ऊपर क्या अपडेट फिलहाल आया है? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि जो नाम बदला गया था पहले औरंगाबाद से संभाजी नगर, जिस तरह से नाम बदला गया उसकी वजह से लोग गुस्से में थे। ये सही बात है। पॉलिटिक्स पूरी तरह से जहां पर निकल के आ रहा है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेता। अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो वो ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी और MIM के नेताओं पर, ये बोलते हुए कि जब से नाम बदला गया और से संभाजी नगर किया गया, तभी एक सांप्रदायिक वातावरण निर्माण किया गया संभाजी नगर शहर में। भड़काऊ भाषण दिए गए, एक रैलीज किए गए जिसमें भड़काऊ बातें की गई। इसकी वजह से ये ऐसी घटनाएं अभी संभाजी नगर में हो रही है। जहां की बीजेपी की बात करें तो बीजेपी उद्धव ठाकरे गुट पर ब्लेम कर रही है, ये बोलते हुए कि देवेंद्र फडणवीस और होम मिनिस्ट्री का नाम खराब करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ऐसे दंगे भड़काए जा रहे हैं। All right, so as far as Sambhaji Nagar, we are told that 6 people have now been
taken into custody. 6 of them have been arrested for the violence that had happened a night before the Ram Navami celebrations that were to take place there. And what we are tracking for now, what's happening in Malwani, in Malad area, around 300 people have been booked for violence. Thank you very much for the moment, Arunil, for getting us those footages. But right now, if we talk about Ram Navami celebrations in Howrah in West Bengal was also marred by violence, with several vehicles that were set ablaze and stones were thrown and shops were ransacked and vandalized as clashes broke out between communities. The mob, we are told, was also targeting the police vehicles and smashed the window panes of a car, as the destruction on the streets of Howrah has armed the BJP to slam Mamata Sarkar over the law and order situation, as the cars were set ablaze and vehicles were toppled during these clashes. While one theory suggests that while the rally was passing through this very road, there happened absolute stone pelting on them, disrupting the procession, and there happened retaliation after that. But then the other theory is while the rally was passing through, a mob part of the rally had raised provocative slogans that also in a way incited people and also in a way suggested that people belonging to a particular community have to follow the majoritarian idea. But then on the ground, this is what violence has left behind. And if you can hear the sound, the noise which is still echoing, it is of chaos which is still unfolding on another street. There is deployment of police forces. Police are trying to control and contain the crowd, but then at this point in time the situation is very, very charged up. People from both sides have been raising slogans, counter slogans, but this, as you hear tear gas shells are being fired on this very lane, and the sounds are reaching on all sides. Police are still trying to control and contain the crowd. Well, you saw that ground report by Tamal. He is sending us those pictures as well. However, if we talk about the opposition, BJP, who has gone all out to blame the Mamata Sarkar over deteriorating law and order situation, as the BJP has been putting out purported videos allegedly showing mob pelting stones at the Ram Navami procession. সবাইকে বাইরে থেকে ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে মেরে দাও, আগুন লাগিয়ে দাও, দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দী। তৈরি থাকো। Well, the opposition BJP here seems to be raising questions on the law and order situation, blaming the Mamata Sarkar and holding it responsible of what transpired in Howrah. उनके भाषण में बोली कि राम नवमी का मिছিল हम अलाउ करेंगे, लेकिन अगर भाजपा का कार्यकर्ता ये सोचे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी इलाका से जाने का टाइम कोई गोलमाल लगाए, तो ये हम छोड़ के नहीं बात करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो वो बात बोले, तभी हम लोगों को मालूम चल गया कि ये जो गोलमाल ये होने वाला है। और गोलमाल कौन कराएंगे? माननीय मुख्यमंत्री कराएंगे। अभी ममता बनर्जी ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना दर्दी है माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ।